Assalamu alaikum warahmatullah. Today is a lesson tutorial number 41 about MS Word, and in this lesson tutorial you will learn how to display or open file menu while working in MS Word, which is a shortkey that is used to show or display the file menu when you are working in MS Word. MS Word में काम करते हुए आपने जो है ना फाइल मेन्यू को आपने शो करना दिखाना है, तो वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसको आप इस्तेमाल करके ये काम कर सकते हैं कि आपने दूसरी फाइल सेव की हुई है उनको ओपन करके, ठीक है, फाइल मेन्यू को ओपन करके शो करके उसमें उनको दूसरी फाइल्स को सेव्ड फाइल को ओपन करना है. So what will the shortkey for that? You will have to press Ctrl Alt plus F2 key from the keyboard to display that file menu. Ctrl Alt plus F2 key from the keyboard. आपने Ctrl Alt plus F2 को प्रेस कर देना है, F2 को प्रेस कर देना है उसको डिस्प्ले करने के लिए. Here now you see on the screen by pressing Ctrl Alt plus F2 key from the keyboard, the file menu is displayed, appear on the screen. Here in the screen you can select the files you saved earlier. अब आपने इसमें ओपन कर लिया है शॉर्टकट की Ctrl Alt plus F2 की प्रेस करके, तो आपके सेव जो फाइल थी वो अपीयर हो गए हैं. उनको आप माउस के राइट बटन के साथ आप उनको अपनी सेलेक्ट जो फाइल सेव्ड उनमें से सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. सेलेक्ट करने के बाद जो है ना आपने उसको ओपन के ऊपर प्रेस कर देना है. यू हैव टू प्रेस आफ्टर सेलेक्टिंग द योर सेव्ड फाइल, press the open button and your next file will be displayed on the screen. So this is a simple and shortcut key to display or open a file menu in while working in MS Word shortcut key. Thanks for watching. Do watch, like and subscribe my channel. Thank you.